super easy for you, okay, to solve any problem like if you are getting from the trigonometry. So hi everyone, welcome back to Learn Easy Hub again. So getting 15 marks in trigonometric ratio the transformation is super easy. As in the previous video we had watched how we can like in the previous video we had covered the entire syllabus, like how many VSEQs, SEQs and LAQs we are going to get, and with the complete basic from the zero. If you don't know anything from the trigonometry, I have explained in such way that it will be helpful for you, okay. And trigonometric table, and in the previous video we had covered like how we can easily able to remember the trigonometric values, cos, tan, cot, like cosecant, all those values, and how we can like write the table by using a short tricks, okay. And with some of the important formulas, like these formulas are nothing but which we are going to use, whatever the sums we are going to do right now, we are going to use this formula. So if you are new to our channel, so just go and subscribe with the bell icon, and don't forget to watch this all videos, because this all topics I have covered in these 3 videos. Go and watch. If you are watching that video, then this like it will be going to super easy for you, okay, to solve any problem like if you are getting from the trigonometry. So now let's start with the important questions. This video we are going to cover, as you many of you guys have requested to upload trigonometric important questions. So that's why I'm uploading these questions. So watch this video till the end and make sure to share it with your friends. Okay. So let's start. So this is the given question, and अपन जो है mainly 7 marks के important questions first solve करने वाले हैं. And don't worry, I'm going to explain you in such way ताकि अगर आप लोग को कोई भी idea नहीं है, don't know about the formulas, and you don't know how to solve the trigonometric questions, you will like you can easily able to understand. ठीक है? So let's start. This is the given question. In triangle, show that cos square A plus cos square B minus cos square C is equals to 1 minus 2 sin A sin B sin C. So mainly this is the given LHS and this is RHS. Okay. So अब यहाँ पे अपने पास 2 choices है. First we can select LHS as our question, and we have at the end अपने को यहाँ पे RHS के equal लेके आना है. Means at the end we have to like bring this answer. And if we are selecting RHS, then we have to at the end we have to get this as the result, LHS one. Okay, so first I'm selecting like in most of the cases we select LHS. Okay, so let's see. This is the given one. Cos square A plus cos square B minus cos square C. Okay, so as we all know कि this is the basic formulas. Okay, so you can easily able to remember this one. Cos square theta plus sin square theta is nothing but equals to 1. ये तो अपने को basic one है, अपने को मालूम है. ठीक है. नेक्स्ट अब यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूरे अपने को cos values दिया हुआ है, right? So simply what I'll do, simply I'll send this sin theta on the other side of the equals to cos square theta. यहाँ पे sin theta अपने को प्लस में है, so is equal to के वो साइड अगर मैं सेंड करी तो ये नेगेटिव में हो जाता. ठीक है. नेक्स्ट, so here अपना एक फॉर्मूला बन गया. cos square theta is nothing but is equals to 1 minus sin square theta. So in the place here I'm replacing this one with cos square A plus 1 minus sin square B. Here B is there, right? So B minus cos square C. So next यहाँ पे क्या करना है अपने को, we have to expand this bracket. Cos square A plus 1 minus sin square B minus cos square C. So here अपने को यहाँ पे 1 अपने को जो है एक इंटीजर फर्स्ट दिया हुआ है. So I'm taking this in front side. Okay, यहाँ पे सामने ले रही हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस प्लस, बिकॉज cos अपना प्लस में है, राइट? एज इट इज जो भी वैल्यूज है वी विल राइट लाइक दैट ओनली. sin square B minus cos square C. नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, वी हैव वन मोर फॉर्मूला हियर. तो अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसे डाउट्स आ रहे हैं फॉर्मूलाज में, यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैं इजी स्टेप बाय स्टेप कौन सा फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म हो रहा, आई हैव बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दैट वीडियो. गो एंड चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. cos square A minus sin square B. Okay, if we have this one, then in place of this one simply we can write cos A plus B
multiplication of cos A minus B. Okay, simply we can write like this. So here अपनी यहाँ पे ये condition है, so I'm replacing this condition with this one. I'll write 1 plus as it is, cos A plus B minus, sorry not minus, multiplication, cos A minus B as it is minus cos square C. So अब यहाँ पे एक और क्या चीज़ रहती है यहाँ पे, like in triangle A plus B plus C, we all know that in a triangle A plus B plus C all the three sides will be equals to 180 degree. So अब यहाँ पे अपने को गिवन कंडीशन, मतलब जो भी क्वेश्चन में अपने को ये देखना है कि कितने अपने को यहाँ पे साइड्स अवेलेबल है, एंड इफ एनीथिंग इज मिसिंग देन वी आर गोइंग टू लाइक सॉल्व दिस वन. सो A plus B है यहाँ पे अपने पास, सिंपली A plus B आई एम कीपिंग इट वो यर, जो भी अपने पास यहाँ पे नहीं है, लाइक C इज नॉट देयर, राइट, simply I'll send it on the other side of the equals to. A plus B equals to 180 minus C. So अब यहाँ पे अपनी वैल्यू बन गई A plus B equals to 180 degree minus C. Simply I'll write here cos 180 minus C as it is. ये जो भी वैल्यूज है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, cos A minus B minus cos square C. ओके, एंड अब आप लोगों को एक और चीज़ याद रखना है, ये है कि whenever you have cos 180 डिग्री माइनस C, और या फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक 180 डिग्री माइनस A प्लस B, अभी आगे आता वो, ठीक है. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू हियर, जब भी ऐसी कंडीशन आप लोग को आ रही है, ऐसी कंडीशन, सिंपली यू हैव टू राइट हियर माइनस कॉस, यहाँ पे जो भी अपने को वेरिएबल है यू हैव टू राइट हियर. नो मैटर अगर आप लोग को यहाँ पे A प्लस बी है तो राइट माइनस कॉस A प्लस बी एज इट इज, ठीक है. सो वेन एवर यू हैव कॉस 180 डिग्री माइनस C, सिंपली माइनस कॉस C 1 प्लस, बिकॉज यहाँ पे अपने को इट विल बी इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल्स टू -1 हियर. ओके, नेक्स्ट. So in the place of cos 180 minus C, we can write minus cos C. Okay. Next, बाकी के जो भी अपने पास cos A minus B, I'll write here simply A minus B minus cos square C. Now, अगर अब यहाँ पे अपन देखें cos C and cos C are quite repetitive, मतलब जो भी है यहाँ पे दो भी नेगेटिव में है, so I can take this as common outside. Okay. Simply like this, 1 minus cos C I'm taking outside. Next, cos A minus B in the brackets, and here plus cos C. Why plus cos C here? Because अगर मैं यहाँ पे भी माइनस लगाई, so minus into minus it will here. So यहाँ पे अगर if I put minus symbol over here instead of plus, minus into minus यहाँ पे plus हो जाता, तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाती, जो कि रॉन्ग है. So that's why I'm giving plus over here. Minus into plus will be minus only. Next, simply अब यहाँ पे अपन cos C है, ठीक है. As I told you कि A plus B plus C equals to 180 डिग्री है. So यहाँ पे अपना cos C वैल्यू दी हुई है. So whatever value we have, जो भी अपने पास वैल्यू है वो छोड़ के आपके पास जो वैल्यूज नहीं है, जैसे कि यहाँ पे cos C है, A प्लस B प्लस C है यहाँ पे, तो cos C अपनी ऑलरेडी वैल्यू है यहाँ पे, तो cos C को छोड़ के जितने भी वैल्यूज है आपके पास में वो सारे यू हैव टू सेंड ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल्स टू. तो क्या वैल्यू बन जाती है अपनी यहाँ पे, C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस A प्लस B. ओके, सो हियर in the place of cos C I can write this. Let's see. I'll write it here simply. 1 minus cos C plus cos A minus B here. As it is here we have plus, right? So I'll write plus here.
plus cos. So in the place of cos c, we can write, in the place of c we can write 180 minus a plus b. Okay, 180 minus a plus b. So now what we have to do here, 1 minus cos c, ये जो वैल्यू है वी हैव टू कीप दिस एज इट इज. नाउ अब जैसे कि मैं आप लोग अभी यहाँ पे बोली कि इफ़ यू हैव cos 180 minus c, you have to write minus cos c. If you have cos 180 minus a plus b, you have to write minus cos a plus b. Simple. You have to substitute this in the place of this one. Cos a minus b, I'll write this value as it is here. Next. So minus cos a plus b. Okay, so here we have one more formula. Here you can see cos, whenever we have cos a minus b minus cos a plus b, जब भी आप लोग का फॉर्मूला है जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करी, यू कैन चेक देयर. ओके, सिंपली वी कैन राइट इट एज 2 sin a sin b. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos a minus b minus cos a plus b. Next, simply what we have to do here, 1 minus we have to write as it is cos c 2 sin. Here in the place of this I'm substituting this one, sin a sin b. if I'm multiplying तो अपने को एक ऑर्डर में लिखना रहता है, जैसे कि a b c, like that. 1 minus 2 sin a sin b cos c. So now let's check अपना given जो क्वेश्चन था, जो अपने को RHS प्रूफ करने का था, is it equals to this one or not. So here you can able to see 1 minus 2 sin a sin b cos c and this is equals to. So hence proved. तो मैं आप लोगों को एक और के कैसा क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ जहाँ पे वी आर सॉल्विंग यूजिंग बाई टू. द क्वेश्चन इज इन द बाई टू फॉर्म. तो वो क्वेश्चन आप लोग कैसा अपने खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आई टेल यू ना सिंपलेस्ट वे. So simply let's see the second question here. So it is very much similar to the first question, but यहाँ पे अपने को जो question है, it is in a a by b form. Okay, a by 2 form. Okay, so this is the given LHS and this is RHS. So let's read the question. If a plus b plus c is equals to 180 degree here, then show cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 is equals to 2 plus 2 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, which means if we are like taking our question as RHS, we have to solve like at the end जो भी अपने को आंसर आता है वो अपना LHS के इक्वल्स रहना, या फिर अगर LHS चूज कर रहे then we have to at the end RHS के इक्वल रहना क्वेश्चन अपना, मतलब जो भी सोल्यूशन है अपना. ठीक है, so first I'm writing here given LHS. cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2. सिमिलरली जैसे कि अपन फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूलाज यूज करें, सेम एज इट इज वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूलाज ओनली, बट थोड़ा डिफरेंट वे में, बिकॉज यहाँ पे अपने को क्वेश्चन जो है बाई टू फॉर्म में दिया हुआ है. सो वी हैव टू मेक श्योर वी आर लाइक इंक्लूडिंग दिस वन. नेक्स्ट, simply I'll write the formulas and I'll explain you. Cos square, here again we are taking b, cos square b by 2. cos square b by 2 को अपन कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 minus sin square b by 2. Simply here I'm replacing this value. I'll write cos square a by 2 as it is. Then in the place of cos square b by 2 में क्या लिखूंगी यहाँ पे, 1 minus sin square b by 2 प्लस cos square c by 2. ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे इंटीजर जो भी वैल्यू है आई एम टेकिंग दिस इन द स्टार्टिंग, 1 प्लस cos square a by 2 माइनस sin square b by 2 प्लस cos square c by 2. एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला, जब भी अपने पास cos square a माइनस sin square b है, देन इट विल बी इक्वल्स टू
कॉस ए प्लस बी बाई टू। अब यहाँ पे डिविजन में है फॉर्मूला, लाइक स्टार्टिंग में अपन कैसा करें, फर्स्ट सोल्यूशन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो अपन उसका लाइक उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी, ओके, कॉस ए माइनस बी, राइट। बट यहाँ पे अपने को बाई टू फॉर्म है, सो सिंपली जहाँ पे भी अपन ए प्लस बी बाई टू लिख रहे, ए प्लस बी लिख रहे, वी हैव टू राइट बाई टू देयर। नेक्स्ट आई एम रिप्लेसिंग दिस विथ दिस वन प्लस cos a plus b by 2, again cos a minus b by 2 as it is plus cos square c by 2। सो अपने को मालूम है कि a plus b plus c is equals to 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखें a plus b ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा यहाँ पे अपने को अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है, लाइक कौन सा वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है, ओके। सिंपली आई सेंड दिस ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल्स टू। तो a प्लस बी अपना किसके इक्वल हो जाता, 180 माइनस सी। जहाँ पे भी a प्लस बी यहाँ पे है अपने को, सिंपली वी कैन राइट 180 सी। बट यहाँ पे अपने को a प्लस बी बाई टू है, सो हियर वी हैव टू राइट बाई टू, एंड यहाँ पे भी अपन ये इंक्लूड करना बाई टू एंड बाई टू। नाउ राइट इन अ डिवाइड फॉर्म सेपरेट, लाइक वी हैव टू जो भी डिनोमिनेटर है बाई टू वी हैव टू राइट सेपरेटली फॉर बोथ, बिकॉज यहाँ पे कैंसलेशन पॉसिबल है। 2 1 2, 2 9 18, 0 एज इट इज, ठीक है। सो 90 माइनस सी बाई टू। सो दिस इज द लाइक वी आर गेटिंग हियर। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब कभी अपने को कॉस 180 माइनस सी आ रहा या फिर ए प्लस बी आ रहा, सिंपली वी आर राइटिंग माइनस कॉस सी। अपन क्या कर रहे थे, 180 के प्लेस पे कॉस 180 ए प्लस बी या फिर ए सी कुछ भी आ रहा था तो सिंपली माइनस और बाकी जो वैल्यू है वो लिखे रहते, राइट। बट इन द प्लेस ऑफ दिस जब भी अपने को कॉस 90 डिग्री आ रहा, 90 माइनस सी या फिर ए प्लस बी आ रहा, सिंपली अपन कॉस की प्लेस पे क्या करना है, साइन लिख देना है, साइन सी ऐसा लिखने का है, ठीक है। सो 1 प्लस, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताती हूँ आप लोग को, सो कन्फ्यूजन नहीं होता। सो ए प्लस बी बाई टू को अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे, 90 माइनस सी बाई, आफ्टर कैंसिलेशन 90 माइनस सी बाई टू, ठीक है। बाकी के जो भी वैल्यूज है आई राइट एज इट इज, नो चेंजेस इन दैट, ओके। सो दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस 90 है अपने पास, 90 वैल्यू इज देयर, सो इन द प्लेस ऑफ 90 आई कैन राइट साइन सी बाई टू, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी साइन में चेंजेस नहीं होते, एज इट इज वी हैव टू राइट। नेक्स्ट कॉस एज इट इज दिस वैल्यू ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई टू। नाउ जैसे कि अपन लास्ट सोल्यूशन में सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर सी इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू कॉस 180 minus, here I'll write this one, cos square c by 2 is equals to cos this one minus sin square c by 2। फर्स्ट ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू कन्वर्ट इन अ 180 डिग्री फॉर्म, ओके। सो cos स्क्वायर c by 2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन सी बाई टू, अगेन cos a प्लस बी बाई टू प्लस 1 प्लस माइनस साइन, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, 1 प्लस 1 अपने को कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 1 इज इन पॉजिटिव एंड 2 दिस वन इज ऑल्सो इन पॉजिटिव, सो आई कैन राइट 2 हियर, ओके। दिस 2 प्लस एज इट इज बाकी के जितने भी वैल्यूज है आई राइट साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, नेक्स्ट माइनस साइन
c square by 2. ठीक है, सो हियर वी कैन राइट दिस फॉर्म. अपने को क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, साइन स्क्वायर सी बाई 2. ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन एबल टू सी साइन सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये दो जो है सेम है, सो वी कैन टेक कॉमन जस्ट लाइक अपन पहले क्वेश्चन में करें. वी हैव टू डू लाइक दैट ओनली. 2 plus sin c by 2, I'm writing in a bracket cos a minus b by 2, next minus sin c by 2. ठीक है, next here what we have to do, as we all know a plus b plus c by this equals to 180 degrees, right? So यहाँ पे c by 2 है अपने पास, so a plus b we have to send on the other side. c equals to 180 plus this one, 180 minus a plus b, like this we have to write. Okay, simply write this one, 2 sin c by 2 cos a minus b by 2, next minus here sin 180 by 2, because यहाँ पे अपने को क्वेश्चन by 2 फॉर्म है, राइट? दिस वन माइनस a प्लस b. ओके, सो यहाँ तक अपना सॉल्व हो गया. नेक्स्ट, अब here you can able to see 190 this a plus b by 2. Okay, simply we can cancel this one 90. Okay, so इसकी प्लेस पे we will get 90 minus a plus b. 2 plus sin c by 2 as it is, ये वैल्यू फिर से लिखना है अपने को. नेक्स्ट cos a minus b by 2 माइनस दिस वन. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोली कि यहाँ पे लुक हियर, आफ्टर ये कैंसिलेशन होने के बाद में वी आर गेटिंग दिस वैल्यू कि 180 को 2 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 90 a प्लस बी बाई 2 एज इट इज़. यहाँ पे अपने पास साइन एज इट इज आई एम राइटिंग हियर. सो जब भी अपने को साइन 90 डिग्री है, सिंपली वी हैव टू राइट कॉस. ओके, कॉस a plus b by 2 in this form. So here I am writing cos a minus as it is, no changes in this one, cos a plus b by 2. Next, so as we all know कि cos a minus b minus cos a plus b अपना किसके इक्वल है, this one is equals to 2 sin a by 2, because by 2 form है, right? sin b by 2. सो लास्ट वीडियो में मैं पूरे तरीके से आप लोगों को क्लियरली फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करी. यू कैन गो एंड चेक. ओके, दिस वन 2, हियर वी हैव 2 प्लस, राइट, 2 प्लस साइन सी. तो अब अपन क्या करते हैं, एक ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं ए बी सी, राइट? सो लाइक दैट आई राइट 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2. तो अब अपन देखेंगे कि वेदर इट इज इक्वल्स टू RHS और नॉट. हियर वी हैव दिस वन. क्या? So this week we are planning to complete our first 100 members family. Okay, so if you are new to our channel, so please subscribe, hit the bell icon, and let me know in the comment section if you have any doubt related to preparation for Maths 1A, 1B, 2A, 2B. Okay, because more videos like this are gonna come to our channel, so make sure to stay up to date and share it with your friends. Till then, take care. Bye bye.